channel. So in today's episode we are going to talk about how we can get best marks in NEET physics paper. We are just going to talk about the physics portion. आपको जैसा पता होगा कि नीट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है एंड इनसे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं. Now coming to the NEET physics NEET pattern, NEET exam pattern, so you know that you will get 45 question for the physics, 45 for the chemistry, and then botany and zoology 45 like that. So you have total 1 hour for solving 45 question for the physics if you divide it equally, right? Or the total 3 hour for the examination. So if you look at the paper pattern, so आपको पता है कि आपको total 90 plus 90 180 क्वेश्चन करने हैं and that too in the 3 hours, so that is also 180 minutes. So for one question you have just 1 minute. आपके पास में केवल 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए. सो 1 मिनट में अगर आप देखें तो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल टफ नहीं हो सकता है. You will not get the question like the JEE mains or the JEE advanced kind of question. There can be 1 or 2 questions, not much questions. Out of 45 question, you may get let's suppose 5 or 6 questions, which are JEE mains level. Generally, if you look at the PYQ as well, so physics के question होते हैं वो simple होते हैं and formula based होते हैं. So that's why first tip I will suggest you is that while you are doing this preparation and whatever the time is remaining right now, if you are a 11th student, then this video is very good for you. And even if you are 12th student or just now if you are appearing for the examination, then also it will be very helpful. During this time period, whatever the time is remaining for you, practice as many possible questions, because questions को practice करेंगे तभी वो आपके पास में like you will get that idea how to solve the question very fast, somewhere how to grasp the question. जनरली क्या होता है कि जब हम किसी नए क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, like I have solved the first question and I am going on to the second question and second question if I am not able to solve, तब मैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूँ तो हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में ही सोचते रहते हैं. that we should not do. इसकी वजह से मिस्टेक्स भी होती हैं. so that's why when you practice the question, practice this also, that in just one reading you should be able to grasp the question. Like if you take I think it will just take 10 to 15 seconds to read the question. In the 10 to 15 seconds आपके माइंड के अंदर ये एक तरह से स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है. Alright. Now the second tip I will give you is the memorize the formula. In the physics, because you are getting 45 question and just 1 minute for one question, so like let's suppose they give you 2 disk and then they are asking where is the center of mass or what is the moment of inertia of the rigid body. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पता नहीं है या फिर सेंटर ऑफ मास नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा. वैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, डेराइव भी कर सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल्स पता हो, बट कुछ जो यूजफुल फॉर्मूला होते हैं वो आपको पता ही होना चाहिए. हर चैप्टर में जैसे अगर मैं लेता हूँ एक ऑन एन एवरेज चैप्टर तो उसमें अराउंड 20-30 फॉर्मूला होते हैं. कुछ थ्योरम्स होती हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ लाइक लोकेशन लाइक center of mass है या फिर moment of inertia. In that you can get somewhat more number of something formula that you need to memorize, but that you need to memorize. So this is my second tip, that you must memorize. Even if you are a very good student, even if you are a very average or a low student right now, you must memorize the formula. They should be on your fingertips. Okay. Then my third tip would be that now these 2 tips were that you can do while before the examination. Now during the examination I am giving for that you 2 tips. One is that whenever you solve the paper, now generally you get 45 questions. So then अगर मैं कोई एवरेज बच्चा लेता हूँ तो एवरेज स्टूडेंट लेता हूँ तो वो 20 क्वेश्चन कर लेगा उसमें से. ओके.
देन वो सोचेगा लाइक दी बोर्ड एग्जामिनेशन, अब तक जो हम बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं जैसे 28 क्वेश्चन होते हैं अपने पास में, तो उसमें से हम जनरली 26, 25 या फिर 28 में से 28 क्वेश्चन करके आते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट 70 में से 60 मार्क्स आ जाएंगे हमारे, राइट, और मे बी 70. Like that, we also think in the competitive examination that I have got 45 question. Out of the 45 question, I need to do at least 40 question. No, it's not like that in the physics. Okay, of course, to get very good rank, you must be getting, but if you are an average student, don't be tempted by this. Alright, so if you are getting, let's suppose, out of 45 question, if you are getting 30 question in the physics, then don't mark 10 questions unnecessarily. Like क्या होता है कि लास्ट 1 मिनट में या लास्ट 2 मिनट्स में जब अपने पास में टाइम रहता है, एंड देन वी थिंक दैट अभी तो क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कर सकते, बट आई हैव 10 क्वेश्चंस विच आई हैव नॉट आंसर्ड, तो ये टेम्पटेशन रहता है दैट आई विल डू मोर क्वेश्चन, सो लेट्स मार्क इट रैंडमली. एंड कई बार होता है कि 10 क्वेश्चन में many students they come and say that last में मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से 2 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, एंड देन आई गॉट 8 - 2 6 मार्क्स दैट. बट ऐसा हर बार नहीं होगा. कई बार होगा कि 10 क्वेश्चन आपने मार्क किए, 10 में से 10 ही इनकरेक्ट हैं, देन यू गॉट -10 इन दैट. सो इससे माइनस मार्किंग बढ़ जाती है, तो इसलिए माइनस मार्किंग का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें. 45 क्वेश्चन हैं तो उसमें जितने क्वेश्चन हो रहे हैं ओनली उतने ही क्वेश्चन करें. जो अननेसेसरी आपको मार्क करना है वो अभी बिल्कुल भी नहीं करना है फाइनल एग्ज़ाम में. कई बार ये हैबिट हम बिगिनिंग में डेवलप कर लेते हैं, जब अपने मार्क्स नहीं आते हैं तब हम रेंडमली ट्राई करते हैं, जैसे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तब, या फिर कोई भी आप आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें आप ट्राई करते होंगे, ऐसा किए होंगे कि आपने कुछ अननेसेसरी लाइक आपको पता नहीं था कि क्वेश्चन नहीं आते थे, फिर भी आपने मार्क कर दिया एंड यू गॉट सम पॉजिटिव मार्क्स इन दैट. बट दैट मे नॉट वर्क ऑलवेज, राइट. नाउ कमिंग टू द लास्ट टिप, दैट इज solve the physics paper in the multiple turns. Like जैसे 45 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो 45 में से 45 नहीं होंगे, और कुछ क्वेश्चन है वो इन बिटवीन नहीं होंगे. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन नहीं होगा. तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको करना है, सीक्वेंस में करना है. आप किसी भी वे से कर सकते हैं, बट लेट्स सपोज इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स पेपर व्हेन यू वर अटेम्प्टिंग द फिजिक्स पेपर, सो फर्स्ट से कुछ आपने क्वेश्चन किए, तो मीनवाइल कुछ ऐसे भी टफ क्वेश्चन होंगे तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप डाउटफुल होंगे, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क कर सकते हैं. सो मे बी यू कैन कीप 3 कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट आर वेरी इजी, सो जो आप फर्स्ट टर्न में ही कर लेंगे. सेकेंड आर दोज अ बिट कन्फ्यूजिंग, सो वो आप सेकेंड टर्न में करेंगे वंस यू विल फिनिश कंप्लीट पेपर आफ्टर दैट. एंड देन थर्ड आर दोज क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू डू, लीव दैम. ओके, तो कभी भी पेपर सोल्व करें तो ड्यूरिंग दिस योर प्रैक्टिस एज वेल यू ट्राई टू सोल्व द पेपर इन द 3 टर्न्स. फर्स्ट टर्न में इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं उनको सबको आप कर लेंगे, साथ में मार्क भी करते जाएंगे. कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, आपको कुछ बिल्कुल भी नहीं पता है, कुछ आइडिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लीव कर दीजिए. डोंट अटेम्प्ट देम, डोंट वेस्ट टाइम ऑन देम. But some questions will be there. Out of 180 questions, there might be 10 questions which are confusing, and you think that why, if I give the time, then I can solve them. Then you can do in second turn. By this tip, you will not miss any easy questions, because the idea is out of 720, you should be getting the maximum marks. And if you start to solve only tough questions, then you may be able to finally reach to the answer of the tough question, but you will miss the answers, miss the easy questions then. So hopefully these 4 tips will help you in the final examination and during the preparation as well. Hope for your best. Thank you.